Deputy Commissioner of Kohima, B. Hingot War, issues official order dissolving proceedings of no confidence motion against Kohima Municipal Council Chairperson Neeraj Chopra. Decision comes after only 6 elected members attended meeting. NSCN-IM leader T.H. Muiva returns to native village Somdal in Manipur's Ukhrul district on Wednesday after over 50 years. The 91-year-old arrived by helicopter and was welcomed by thousands in traditional Naga attire. President of Indigenous Faith and Cultural Society of Arunachal Pradesh, Dr. Amy Rumai, reaffirms Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act 1978 to remain active and enforceable despite pending finalization of its rules as directed by High Court. Preparation underway in Karpuri, Gram Samas Tripura as Prime Minister Narendra Modi is set to kick off his Bihar Assembly election campaign with a rally on October 24. Olympic gold medalist Neeraj Chopra officially promoted to Lieutenant Colonel Honorary in a peeping ceremony held in New Delhi on Wednesday. Ceremony attended by Defence Minister Rajnath Singh and Army Chief General Upendra Dwivedi. Hello viewers, you are watching English Primetime and this is Imlison Lamchen. Now the news in details. On 22nd October 2025, the Deputy Commissioner of Kohima, B. Hingot War, issued an official order dissolving the proceedings of the no confidence motion against Kohima Municipal Council Chairperson Neeraj Chopra after only 6 elected members attended the meeting, failing to meet the quorum required under the Nagaland Municipal Act 2023. As a result, the motion has been declared null and void, and Chopra will continue to hold his position as chairperson. This has been formally informed to all the elected members. Former Tripura Chief Minister and current Lok Sabha MP Biplab Kumar Deb said at a Kali Puja event that with Goddess Kali's blessings, West Bengal voters will reject CM Mamata Banerjee and her Trinamool Congress in the 2026 Assembly elections. Deb claimed that BJP will come to power with record votes, pressing Prime Minister Narendra Modi for focusing on the state's development. He also accused Mamata Banerjee of land issues near Kalighat and said that the people will give her a befitting reply in 2026. কালিমায়ের আশীর্বাদে এবার বাংলার মানুষ তৈরি হয়ে বসে আছে 2026-এ কালিমায়ের দুর্গা মায়ের আশীর্বাদে নরেন্দ্র ভাই মোদির মার্গদর্শন দিশাতে বাংলার মানুষ বাংলা থেকে উঠে এসে যে বিদ্রোহী মানসিকতা রাখে, যে বাঙালির কথা চিন্তা করে, যে বাংলার কথা চিন্তা করে, যে বাংলার মানুষের কথা ভাবে, যে বাংলার উন্নয়নের কথা ভাবে, এমন একজন ব্যক্তিকে আমরা বসাবো, বাংলার মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে বসাবো। বাংলার মানুষের মধ্যে একটা কনফিউশন, একসময় কমিউনিস্টকে বসিয়েছিলাম বহু আশা করে কংগ্রেসকে সরিয়ে, 32, 33, 34 বছর শাসন করলেন। তারপরে আবার এই মহিলা আসলেন, কিছুদিন পর ওনার প্রথম ছিল না, তারপরে ভাতিজার আবির্ভাব হলো। প্রথম সিজনে কিন্তু ভাতিজা ছিল না, ছিল কি ছিল না, তৃতীয় সিজনে ভাতিজার উদ্ভব হলো। তারপরে আর কি কি উদ্ভব হবে এখনো বাংলার মানুষের জানা নেই। কিন্তু যেটা আমি বললাম, ওনার বয়স হয়ে গেছে, তার জন্য অব্যাহতি দিতে হবে। আর তার জন্য আবার অনেকের অব্যাহতি হয় না যদি তার সবকিছু খেয়াল থাকে, মানসিকতা সঠিক থাকে। ওনার তো মানসিক মনোভ্রম হয়ে গেছে, তো মনোভ্রম হয়ে গেলে তো তার হাতে সত্তা দিয়ে রাখা, তো কালিমা কোনোদিন মানবে না, কালিমা মানবে না। গুন্ডারা মানব, কাটমারির মানব, ভাতিজার রোগে মানব, কয়লা চুরের মানব, গরু চুরের মানব, কিন্তু
বাংলার মানুষও মানবে না, কালিমাও মানবে না, দুর্গামাও মানবে না, আর বাংলার মেয়েরও মানবে না। কারণ কি, বাংলার মেয়েদেরকে বলছে রাত্রিতে সন্ধ্যার পরে ঘর থেকে বেরিয়েও না। বাংলার মেয়েরা কি বলে, পাগল হয়ে গেছে উনি, পাগল হয়ে। বাংলার স্বাধীনতা মহিলা তাদেরকে বলে সন্ধ্যার পরে ঘর থেকে বেরোবে না। যদি সন্ধ্যার পরে ঘর থেকে বেরো তাহলে তো রেপ টেপ এই ঝড়ো ঘটনা হবেই। উনি সার্টিফিকেট দিচ্ছে, আগ্রহ দেখাচ্ছে, বাংলার মেয়েদেরকে বলছে বেরোতে পারবে না সন্ধ্যার পরে, আর কিছুদিন পরে বলবে বাংলার মেয়েরা বুরখা পরেই থাকো। আরে তালিবানের লোক, তালিবানের বিদেশ মন্ত্রী ভারতে চলে এসছে। তালিবানের যেই তালিবানে বুরখা পরে ঘুরতে হয়, যেই তালিবানেরা কোনোদিন সামনে মহিলা সাংবাদিকের সামনে কথা বলে না, ভারতে আসার পর এই তালিবানের বিদেশ মন্ত্রী ভারতীয় মহিলা পত্রিকাদের সঙ্গে কথা বলে বিনিময় করে গেছে। সেই তালিবানে যেখানে মহিলাদেরকে অধিকার দেওয়া হতো না, সেই তালিবান আজ ভারতীয় রাস্তাতে চলে বুরখা থেকে মহিলাদেরকে। Following a letter from the Tripura State Committee of the All India Krishak Sabha outlining 10 key demands, Chief Secretary J.K. Sinha held a meeting with the Krishak Sabha representatives to discuss farmers' issues. At a press conference in Agartala, former Minister Papitra Khar and Agor Debarma detailed demands including extending the opening hours of the India-Bangladesh international border barbed wire gate from 6 a.m. to 5 p.m., ensuring permanent agreements and freedom of movement for farmers and agricultural equipment, and promoting cultivation of seasonal and cash crops such as vegetables, tea and lemons. Other requests include compensation for crop damage caused by high voltage lights, increasing the number of barbed wire gates, installing solar pumps for irrigation, and providing education, medical facilities, rehabilitation, and government benefits to families residing across the border. কিন্তু আপনাদের বিভিন্ন মিডিয়াতে আসছে চোরাকারবারিরা অবাধে সমস্ত চোরাকারবার এই বাংলাদেশে পাঠাচ্ছে, গরু পাচার হচ্ছে, অথচ কৃষক করতে পারে না। বিএসএফই তো তার দায়িত্ব, পুলিশই তো তার দায়িত্ব। তাহলে এগুলো অবাধে হতে পারছে, কিন্তু আমার কৃষক তার জমি করবে, কৃষক সে ওইখানে আছে যারা তারা পড়াশোনা করবে, তার সামাজিক অনুষ্ঠান করবে, এটা করতে পারবে না। তাহলে এই যে দ্বিচারিতা, বলে এটা একা রাজ্য সরকারের দায়িত্ব না, রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার সবাই মিলেই। এই কারণে আমরা মুখ্য সচিবের গেছি, উনি অবশ্য সদর্থক কথাবার্তা বলেছেন, যেটা আমরাও জানি এটা হওয়া দরকার, এটা কি করে করা যায় আমরা দেখব। এই হলো মোটামুটিভাবে যে বিষয়গুলো আর কি আপনাদের যদি হচ্ছে। কিন্তু আপনাদের বিভিন্ন মিডিয়াতে আসছে চোরাকারবারিরা অবাধে সমস্ত চোরাকারবার এই বাংলাদেশে পাঠাচ্ছে, গরু পাচার হচ্ছে, অথচ কৃষক করতে পারে না। বিএসএফই তো তার দায়িত্ব, পুলিশই তো তার দায়িত্ব। আমরা দেখলাম গতকালকে রাত্রিবেলা মুখ্যমন্ত্রী একটা স্ট্যাটাস দিয়েছেন হোয়াটসঅ্যাপে। স্ট্যাটাসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমি মনে করি আর কি, যে তিনি দিয়েছেন জুলাইবাড়ির রাখাল নমো এবং সঞ্জীব নমো দুইজনের লাউ ক্ষেত প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তিনি তার নিন্দা করেছেন এবং যারা করেছে তাদের তিনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলেছেন। ভালো, কিন্তু এই NSCN-IM leader T.H. Muiva returned to his native village Somdal in Manipur's Ukhrul district on Wednesday after over 50 years. The 91-year-old arrived by helicopter and was welcomed by thousands in traditional Naga attire. Muiva, the chief negotiator in the ongoing Naga peace talks, is expected to stay in the village for a week. His visit comes amid ongoing ethnic violence in Manipur, which has left over 260 dead since May 2023.
The Assam State School Education Board has announced that the Higher Secondary Final Examination 2026 will be held in February to March 2026. The online application process for eligible candidates will start on October 22 and continue until November 25, 2025. Only online submissions via the official portal will be accepted and no offline applications will be entertained. The board has instructed all junior colleges and higher secondary schools under Division 2 to ensure no eligible student misses the registration deadline. Registration numbers remain valid for 5 years, but late applicants will be barred from the exam. Students from non-recognized institutions will be considered institutional private IP candidates and must pay additional fees. Fee exemptions apply for students from recognized institutions with parental income below ₹2 lakh. Betterment, reappearance, subject repeat, compartmental, and certain other candidates can also apply. Improvement examinations allow up to 4 subjects for retake with a new consolidated mark sheet issued after surrendering the previous one. No changes in subject or schemes will be permitted after submission. ASAP emphasized strict supervision of the online application process by institutions, holding principals accountable for any omission to ensure a smooth registration ahead of the exams. Dr. Amy Rumai, President of the Indigenous Faith and Cultural Society of Arunachal Pradesh, has reaffirmed that the Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act 1978 remains active and enforceable despite the pending finalization of its rules as directed by the High Court. Citing confirmation from former Chief Secretary Tabom Bam, who had invoked the act during his tenure as Deputy Commissioner in Konsa to deny an inner line permit to a bishop planning mass conversions, Dr. Rumai emphasized the act's critical role in protecting the state's indigenous faith and cultural heritage. He added that IFCSAP will continue to push for the full implementation of the act and its rules to ensure effective enforcement against forced religious conversions. As Diwali celebrations wind down, Chitragut spanning Madhya Pradesh and up welcomes traders for its unique donkey fair held at the day after the festival. Donkeys brought from MP, Chhattisgarh, Rajasthan and Bihar fetch prices running into lakhs. A centuries-old custom sees buyers and sellers sealing deals with a handshake under a towel. The fair adds to the city's rich religious and cultural heritage, attracting a distinct crowd each year. चित्रकूट का बहुत ऐतिहासिक मेला है। जब औरंगजेब जो है मूर्ति खंडन का काम करता था, मठ मंदिरों में अतिक्रमणकारी करता था, तब उसका यहाँ कभी लाव लश्कर पड़ा था। तो यहाँ उनके जो यही घोड़े खच्चर हैं इत्यादि में इनका रसद सामग्री बारूद इत्यादि सब रहता था। सैनिक इनके रहते थे, तो यहाँ करके डेरा डाला था। चित्रकूट यहाँ मजगेरनाथ बाबा शंकर जी का स्थान है। वहाँ पे जब उसने अपना प्रहार किया तब उनके सारे सैनिक यहाँ अस्त व्यस्त होकर के बीमार हो गए। तब से जो है वो क्षमा मांगा शंकर जी से और बालाजी नाम का प्राण प्रतिष्ठा कराया यही गंगा के किनारे। तब ये सदियों से उसी पर्व में दीपावली के पर्व में आज मनाया जा रहा है। यहाँ बहुत दूर दूर से जो है पशुधन मान के व्यापारी आते हैं जो दीपावली में इसको लक्ष्मी के रूप में विक्रय करते हैं। चित्रकूट का बहुत ऐतिहासिक मेला है। जब औरंगजेब जो है मूर्ति खंडन का काम करता था, मठ मंदिरों में अतिक्रमणकारी करता था, तब उसका यहाँ कभी लाव लश्कर पड़ा।
James Borua was found dead under mysterious circumstances at his apartment in Beltolas, Surya enclave. He was reportedly with his girlfriend, Aninditya, who brought down his body after the incident. Suspicions have led Dispur police to detain her for questioning. A forensic team is examining the scene and investigations are ongoing to determine the cause of death. Actually, James আৰু মই 2018-19 একেলগত এই চেম ৰুমতে ৰুমমেট আছিলোঁ। মই আজিলৈকে মানে তেনেকুৱা মানে হেৰি পোৱা নাই, মানে যোনটো মানে ধৰি লওক ছুইচাইড টেণ্ডেঞ্চি এটা বুজি পোৱা যায় ন মানুহৰ, আজিলৈকে তেনেকৈ কোনো মানে হেৰি পোৱাই নাই। মানে অলপ অলপ বুজা যায় আৰু মাজতে লগ কৰি থাকোঁ তাক, তাৰ ৰুমতো আহি থাকোঁ। তেনেকৈ কোনো মানে বোলে মেণ্টেলি কিবা ডিষ্টাৰ্ব হৈ আছে, যদি হৈছে কিবা ইনষ্টেণ্ট হৈছে লগত এই মানে ছোৱালী এজনী থকা বুলি কৈছে, চিকিউৰিটিৰ পৰা শুনিছোঁ, কিবা কি নাম আছিলে পাহৰিছোঁ। তাই বহুত বেছি দিনৰ ৰিলেশ্যন নহয়, খুব সম্ভৱ 1 বছৰ হৈছে বা নাই। তো সেই হেৰি অহাৰ পৰা আমি অলপ ছাইড হৈ গ'লোঁ আৰু মানে যেতিয়া মানে আপোনাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপত আহিলোঁ তেতিয়া আমি মানে ইমান মই মানে বিশেষকৈ মই অলপ ছাইড হৈ গৈছিলোঁ। এতিয়া তেনেকৈ চিকিউৰিটিৰ মুখতে শুনিছোঁ যে এনেকৈ চিপ লৈছে, তাৰপিছত কি নমাইছে, তাৰপিছত ওচৰত কলিং বেল বজাইছে, তাৰপিছত পুলিচ মাতিছে সেনেকৈ, তাৰপিছত ছোৱালীজনী বোলে পুলিচ থানাত লৈ গৈছে। দুজন একেলগে আছিলে, দুজনে একেলগতে আছিলে। সেইটোৱে সিহঁতৰ 3 BHK ৰুম, যোনটো ৰুমত তাৰ নিজৰ মানে বেডৰুম হয়, সেইটো ৰুমত কিন্তু নহয় বুলি কৈছে, বেলেগ ৰুমত বুলি কৈছে। চিকিউৰিটি কৈছে, আমাকতো সোমাব দিয়া নাই, ঠিক আছে। চিকিউৰিটি কৈছে বেলেগ এটা ৰুমত। পুলিচে লৈ গৈছে তেখেতক, ছোৱালীজনীক পুলিচে লৈ গৈছে। So viewers, now let's go for a short break. Welcome back. Let's move to the next news. Shimla is gearing up to host the 3rd edition of the Paragliding Flying Festival and Hospitality Expo 2025 in Junga from October 25 to 28, with participants from 11 international and 70 Indian paragliders. The event will be inaugurated by Chief Minister Sukhvinder Singh Suku on October 25, and legendary wrestler the Great Khali will be the festival's chief guest on October 26. According to Festival Director Arun Rawat, the event's goal is to promote adventure sports in Himachal Pradesh, while also attracting more tourists. Paragliders from 7 countries will take part and extensive safety precautions have been taken. Accomplished judges have been invited to monitor the Pre-Paragliding Accuracy World Cup and Pre-Asian League Championship, which will also take place during the event. Is it now? It is called a Shimla Flying Festival and Hospitality Expo. We are a tourism state. हॉस्पिटैलिटी का एक्सपो ये शायद दूसरी बार हो रहा है, पिछले साल हमने किया था, एंड दिस इज सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, जिसमें कि उनका सपोर्ट रहता है, और इसमें जो स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स इंक्लूडिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वो अपने प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट करते हैं विच आर रिलेटेड टू हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, यू नो, एंड उनकी सेल भी करते हैं. तो दिस बिकम्स अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म फॉर पीपल टू कम, see the things,
enjoy the paragliding, and also have some kind of entertainment programs also, which I'm going to share in my presentation. So this is how it goes. Question answer session we'll have later. In case if you agree, then we can have a presentation. Let us go through the presentation quickly, and then we have a question answer sessions from all, any kind of questions. Is it okay? Is this format okay? Chaliye. Kaam karte rahe. By the time we have a question answer session. So I think, is it now fair to have a question? So over to you. I mean, to you all. So we are there. सर कितने टाइम से ये हो रहा है? तो ये नेशनल इवेंट ही था, बट दिस टाइम थर्ड ईयर जस्ट टर्न टू इंटरनेशनल इवेंट ना. नेशनल इवेंट में कितना इसको फेम मिला है अभी तक? नॉट टू दैट एन एक्सटेंट, ट्राइंग आवर बेस्ट. हमारा काम है कर्म करना, बाकी इसको वहां तक पहुंचाना ये आपका काम है. Yes, the same question they have been asking, the same question. So, sir, जहाँ तक safety का सवाल है, the preparation concerned, we have a 24/7 ambulance, 24/7 doctor, and then SDRF. Then this is the team, our technical team, as I said. So, Mr. Raj. An unidentified woman's body was recovered from a drain near a garden in Mekhipur, Nazira, in Assam's Shivasagar district on Wednesday. Locals suspected that she was murdered and her body dumped at the spot. Nazira police have launched an investigation to identify the victim and to determine the cause of death. Further details are awaited. ঘৰত আছিল আমাৰ গাঁৱৰ কিমান সদস্য এজন মোক ফোন কৰিলে যে মেকিপুৰ আমাৰ যিটো মানে 16 নম্বৰ বাগান বুলি কয় 16 নম্বৰ বাগানত ডেড বডি এটা ওলাইছে বুলি ক'লে ফোন কৰিলে ফোনৰ পাছত আমি গোটেই সদস্যক ফোন কৰিলোঁ আৰু আমাৰ কমিটি মানুহ গোটেইখিনি আহিলোঁ আৰু চাই মেলি দেখিলোঁ হয় বডিটো তাৰপাছত থানাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ থানা আহি পালেহি আকৌ এতিয়ালৈকে চিনাক্ত হোৱা নাই ক'ৰ হয় মানে মেকিপুৰৰ নহয় বুলি আমি অনুমান চবে কৰিব পাইছোঁ যিমানখিনি মানুহ আহিছে কোনো এতিয়ালৈকে ধৰিব পৰা নাই যে মেকিপুৰৰ হয় নহয় বুলিয়ে চবে কৈছে বডিটো ক'ৰ বুলি এতিয়ালৈকে চিনাক্তকৰণ হোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে মই মাইছে বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে না আপোনালোকে বৰ্তমানতো দেখাতো তেনেকুৱাই লাগি আছে অলৰেডি দাগ চাগ আছে ডিঙিত আপোনালোকেও চালে কিন্তু কোনো হত্যা কৰি নলত পাই থোৱা এটা সন্দেহ আছে তেনেকুৱা সন্দেহটো সেইটোৱে হৈছে মানে ধৰি লওক মোৰ মাইকী মানুহ পাত ছিঙিবলৈ আহিছিলে ধৰি লওক তাৰ লগৰজনী পালে তাৰপিছত মাইকী মানুহ কি হ'ল মোক ফোন কৰিলে জনালে যে ইয়াত মানুহ এগৰাকী পৰি আছে মৰি পৰি আছে বুলি তাৰপিছত মই মানে ধৰি লওক আৰু মোক ফোন কৰাৰ মাত্ৰক মই আৰু ভিডিপি ছেক্ৰেটাৰীক জনাওঁ যে প্ৰবীণ সিং जब पैसा हम The Bihar police has rescued a man kidnapped at gunpoint by a group of 7 in Megnar area within 24 hours. The victim's wife, Parminder Paswan, filed a complaint regarding after receiving ransom threats of ₹3 lakh. Police recovered the man from Saran district from the house of the prime accused Pramod Kumar. 6 suspects, including Sailendra Kumar and others, have been arrested, while one remains absconding. The investigation continues. सादे थाना अंतर्गत समुद्री देवी उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया कि उनके पति परमिंदर पासवान का अपहरण कर लिया गया है। सूचना का तुरंत सत्यापन किया गया और सत्यापन करने में सूचना प्रथम दृष्टया सत्य पाया गया क्योंकि इसमें जो है उनके द्वारा एक वीडियो फुटेज भी उपलब्ध कराया गया जिसमें देखा जा रहा था कि उनके पति को 2-3 व्यक्ति मिल करके पिस्टल बट से वहाँ उसको जो है सो पैसे की डिमांड किया जा रहा है उनके द्वारा कि पैसे लेके आओ तब छोड़ेंगे नहीं तो मार देंगे। इसी के आधार पे हमने तुरंत FIR रजिस्टर किया और पुलिस अधीक्षक वैशाली के निर्देशन में टीम का गठन किया गया। टीम तुरंत मानवीय और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर में मढ़ौरा थाना सारण जिला से मुक्त कराया गया उनको। और इस घटना में जो प्रमुख व्यक्ति है जो मुख्य आरोपी है प्रमोद कुमार उनके घर से ही जो है सो इनको मुक्त कराया गया। इस घटना में इनके साथ शैलेंद्र कुमार उर्फ कालू, रंजन कुमार। Jammu Zone Inspector General of Police Bhim Sen today said that foreign terrorists hiding in dense forest remain a major challenge. He assured that security agencies are enhancing counter-terrorism and border protection measures to neutralize them soon. Tuti highlighted that terrorists are using advanced technologies like drones, but police stay ahead to maintain security.
Around 120 counter-terrorist operations are conducted daily in the Jammu zone. The remarks came during police commemoration day events held across Jammu to honor martyrs who sacrificed their lives, including the 1959 CRPF heroes at Hot Springs, Ladakh. टेररिस्ट यस पिछले 2 सालों से ये एक महत्वपूर्ण या अहम चैलेंज के रूप में उभर कर सामने आया है, लेकिन हम अपना काउंटर टेररिज्म ग्रिड है उसको मजबूत कर रहे हैं, बॉर्डर प्रोटेक्शन ग्रिड है उसको मजबूत कर रहे हैं और जल्दी ही जो विदेशी आतंकी इन पहाड़ों पे छुपे हुए हैं। More than 30 people were injured during the annual Hingot War in Gautampura Indore district on Tuesday evening. Participants from Gautampura and nearby Runji hurled firecrackers made from the Hingot fruit at each other in this traditional Diwali event. 2 seriously injured participants were hospitalized, one with a broken arm and another with a nose injury, said Block Medical Officer Dr. Vandana Kesari. Police and administrative officials had set up barricades and deployed around 300 personnel for safety. The Hingot fruit is hollowed, filled with gunpowder and used as a rocket-like firecracker. The tradition dating back 200 years to Holkar rule symbolizes guerrilla warfare against Mughal invasions. Despite injuries and occasional deaths, authorities have not banned the event due to its cultural significance. लोगों का अभी पक्का आंकड़ा बताना मुश्किल है। अलग अलग एम्बुलेंस में अलग अलग लोगों को लगभग 35 से 40 के बीच में, मतलब वो भी कम ज़्यादा हो सकता है, पक्का आंकड़ा अभी नहीं बता सकते, पर लगभग 35 से 40 के बीच में है। और उसमें से एक सीरियस था जिसको हाथ में फ्रैक्चर था, एक को नाक में थोड़ी चोट होने के कारण थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा थी, तो उनको देपालपुर न्यू इंदौर हॉस्पिटल में भेजा गया है। केवल योद्धा ही थे कि इसमें कोई दर्शक वगैरह भी था? दर्शकों की संख्या ज़्यादा थी। कितने दर्शक होंगे वो मैं पक्का बताना अभी बता नहीं पाऊँ। गौतमपुरा की ऐतिहासिक परंपरा है, इसमें कलगी और तोरा 2 ग्रुप होते हैं जो आपस में युद्ध करते हैं। दोनों में लगभग 50-50 की संख्या में योद्धा होते हैं। इसको देखने के लिए लगभग 5 से 10 हज़ार जो दर्शक हैं वो आसपास के गाँव से आते हैं। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगभग A 40-year-old man, Ranjan Pasi, was brutally beaten to death with bricks and stones near Mundera Toll Plaza following a minor dispute. Pasi, a bus driver from Nimsai, was attacked at a petrol pump and later declared dead at the hospital. The incident sparked outrage, leading family members and locals to block the Prayagraj-Kanpur highway, demanding swift justice. Protesters called for a police encounter and demolition of the accused homes, with some vandalism reported. Police have registered an FIR and formed a team to apprehend the suspects while controlling the situation. कि जो भी घटना हुई है पंप के बाहर हुई है, पंप के अंदर कोई घटना नहीं हुई। पंप में थोड़ा आपसी मारपीट हाथ चला, जो मैंने उसको हटवा दिया, यहाँ से चले गए लोग और रोड पर जाकर के लड़ाई किया। सूरज केसरवानी की जो एक दुकान है उसी के ठीक सामने ईटा पत्थर चला और वहीं पे वो लड़के को चोट लग गई। उसको हॉस्पिटल ले गए तो पता चला कि वो ख़त्म हो गए। आज हफ्ते 10 दिन पहले सूरज केसरवानी की झगड़ा बगल में रहने वाले अबरार लोगों से हुई थी, पप्पू से, तो जिसके कारण अभी वो लोग जाम लगाए हुए थे। तो वहाँ से कुछ लोगों को ले आकर के सारी घटना पेट्रोल पंप पे उन्होंने लोगों को भ्रमित किया और मौके पे वो खुद आए और मौके पे आ करके उन्होंने ईटा पत्थर जो भी मेरे नुकसान हुआ है वो सूरज केसरवानी ने करा। तो मेरे अद्धा से अद्धा मार दिए जीटी रोड के बगल में पेट्रोल टंकी के पास। बहुत सीधा मेरा भाई था, किसी से कोई मतलब नहीं रखता था। रोड बेस बस चलाता था मिर्जापुर से, कल छुट्टी पे आया था, उसको अद्धा मार दिए। प्रशासन से हमारी यही मांग है कि उनका इनकाउंटर हो, उनका घर गिरे, बस हमको कोई और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अब ये हमें नहीं पता, हम तो घर पे थे, फोन करके बुलाएगा तब हम लोग भाग कर के आए तो रोड के 4
Preparations are underway in Karpuri Gram Samastipur as Prime Minister Narendra Modi is set to kick off his Bihar Assembly election campaign with a rally on October 24. Named after former Chief Minister Karpuri Thakur, the venue holds significant political and cultural importance. District officials and local BJP leaders are ensuring smooth arrangements, with Modi expected to visit Karpuri Thakur's residence during his visit. Samastipur votes in the first phase on November 6, with counting on November 14. देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 24 तारीख को प्रस्तावित है। इसके लिए सुरक्षा की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से देखी जा रही है। किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा और एक अच्छी व्यवस्था में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होगा। 2025 विधानसभा चुनाव के यात्रा के क्रम में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के प्रतिमा स्थल पर माल्यार्पण करने के पश्चात इस चुनाव का आगाज करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं। और इस दरमियान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एनडीए गठबंधन के सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं, प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आतुर हैं और ये लाखों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा होने वाले हैं। आज सभा In Gujarat's Savarkundla, a unique Diwali tradition called the Hingot War marks the festival. For over 100 years, villagers from Savar and Kundla on opposite sides of the Navali river have thrown bombs met by stuffing gunpowder into Hingot fruits at each other. These fairy missiles create large flames but don't always explode, marking the event a spectacular and fiery celebration. તમે જો ઇંગોરિયાની રમત સાવરકુંડલાને દેશમાં આ ઇંગોરિયાની રમતે અલગનું સ્થાન આપ્યું છે. નાત જાતના ધર્મના ભેદભાવ વગર તમામ લોકો સમાનતાના ભાવ સાથે, એકતાના ભાવ સાથે, અનેકતામાં એકતાનો એક રંગ કેવો હોય, હું એમ માનું છું કે માત્ર ભારત નહીં, દુનિયાને સાવરકુંડલાની આ રમતમાંથી શીખવું પડે. આજે તમે જો ઇંગોરિયાની રમત સાવરકુંડલાને દેશમાં આ ઇંગોરિયાની રમતે અલગનું સ્થાન આપ્યું છે. નાત જાતના ધર્મના ભેદભાવ વગર તમામ લોકો સમાનતાના ભાવ સાથે, એકતાના ભાવ સાથે, અનેકતામાં એકતાનો. BJP MP Sudhanshu Trivedi on Wednesday accused the Rashtriya Janata Dal of misleading the public with unrealistic promises on government jobs and women's welfare schemes. He alleged that RJD leader Tejasvi Yadav is under pressure due to internal alliance issues and claimed that the party's announcements are politically driven without any clear plan. The remarks comes as political tensions rise in Bihar ahead of the upcoming elections. इससे पहले उन्होंने ये दावा किया था कि हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। मुझे लगता है कोई भी गंभीर व्यक्ति समझ सकता है बिहार की आबादी वर्तमान समय के प्रोजेक्शन के अनुसार 13.5 करोड़ है और 4.2% पर फैमिली ऑन एन एवरेज होते हैं। अगर आप उससे डिवाइड करें तो 3 करोड़ कुछ लाख के आसपास आता है। 23 लाख लोगों के पास सरकारी नौकरियां, उनको आप हटा दें तो भी 2 करोड़ 90 लाख के आसपास परिवार पड़ते हैं। और हर व्यक्ति को अगर आप सरकारी नौकरी देंगे तो मिनिमम 30-35 हजार तनख्वाह से लेकर 2 लाख तक की तनख्वाह होती है, यानी 70-75 हजार रुपए ऑन एन एवरेज सैलरी पड़ेगी। तो मतलब 10 लाख रुपए साल, और 10 लाख रुपए साल को अगर आप 2 करोड़ 90 से गुणा कर दें तो 29 लाख करोड़ रुपए। बिहार का बजट है 3,17,000 करोड़ रुपए। कहावत होती है उतने पांव पसारिए जितनी चादर होए, पर उतनी बात बोलिए जिसका 1/10 भी बजट न होए। जिस घर में सरकारी नौकरी लेनी होगी, जमीन तो पहले ली जा चुकी है, अब घर बार भी बेच देना पड़ेगा। मतलब भाव ये हो गया सरकारी नौकरी के बदले में घर ले लेंगे। अभी तक तो जमीन ली थी। और जहां तक वो महिलाओं की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है राजद का कोई व्यक्ति यदि ये बोले, लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में आजीविका तो छोड़िए। An 18-year-old woman suffered an eye injury from a firecracker on Diwali night in Ladossarai, South Delhi. Her family claims the crackers were thrown deliberately, but police said no formal complaint or allegations have been filed yet. The woman was taken to a nearby hospital and treated for her injuries.
के साथ जो घटना हुई है, क्या है पूरा मामला बता दीजिए। 6 महीना से वो दुश्मनी था मेरा बेटी के, दुश्मनी हमारे बेटी से हाथ निकाल दी, आँख पूरा निकाल लिया। 6 लड़का ऊपर छत पर जाके हमारे बेटे का कोई कार्रवाई नहीं किया है, नहीं इलाज चल रहा है। A 5-year-old boy was kidnapped and brutally killed by a driver named Nitu, who worked for his father's transport business in Delhi's Narela area. Police suspect the murder was an act of revenge after Nitu was reprimanded and slapped by the boy's father for earlier misbehavior. The boy's body was found in Nitu's rented room. Nitu is absconding and multiple police teams are searching for him using CCTV footage and intelligence. An FIR has been registered and investigations continue. Defense Secretary Rajesh Kumar Singh met Chad's ambassador to India, Itjima Batta, to discuss enhancing military cooperation between New Delhi and N'Djamena. The talk focused on military training, capacity building, defense equipment supply, and counter-terrorism efforts. India and Chad have maintained cordial ties, with Chadian forces attending specialized training in India under ITEC. Earlier in 2025, a Chadian defense delegation participated in Aero India 2025, strengthening bilateral defense relations. India continues to engage with African military leaders to promote joint training, peacekeeping, and capacity building initiatives. The Outer District Delhi Police arrested 12 individuals involved in illegal gambling across multiple areas including Mangolpuri, Sultanpuri, Raj Park, Nangloi and Rail near Plant. During patrols on Monday, police caught suspects red-handed, recovering thousands of rupees and gambling-related items such as Sasta slips, betting tokens and record books. Multiple FIRs under sections of 12, 9, 55 of the Delhi Public Gambling Act were registered at respective police stations. Quick police action prevented suspects from fleeing, leading to successful arrest and seizure of evidence. Former Pakistan Test captain Misbah Ul Haq is set to take over as the Director of International Cricket Operations at the Pakistan Cricket Board, sources confirmed Tuesday. PCB Chairman Mohsin Naqvi personally encouraged Misbah, 49, to apply for the role. Misbah, who retired in 2017, has remained closely involved with the PCB as a mentor and advisor. He previously served as head coach and chief selector but stepped down amid administrative changes. The position opened after Usman Walla's departure. Indian T20 captain Surya Kumar Yadav visited the Sai Baba temple in Shirdi with his wife Devisha Shetty ahead of the 5-match T20 series against Australia starting October 29. The couple participated in midday aarti and offered prayers, with Surya Kumar presenting a saffron shawl at Sai Baba's Samadhi. After visiting Dwarkamai and Gurustan, he will depart for Australia as fans await a strong performance under his leadership. The anti-corruption body Lokpal has invited a tender to purchase 7 BMW 3 Series 3330 L1 car worth around ₹5 crore, sparking criticisms. Congress MP Abhishek Manu Singhvi called it a tragic irony, questioning the integrity of the institution ordering luxury vehicles. Activist Prasant Bhushan accused the government of weakening the Lokpal by appointing complaint members indifferent to corruption.
The tender specifies white M Sports long wheelbase models known for their luxury and comfort. The Government of India has provided 81 school vehicles to various educational institutions in Nepal's 48 districts, highlighting the country's deep and long-standing connection. Meanwhile, the Indian Embassy in Kathmandu held the initiative as part of India's continuous development cooperation with Nepal. This latest contribution builds on India's long-term support for Nepal's education sector. The embassy stated that over the past 3 decades, India has provided 381 school buses to institutions in Nepal. INS Sahyadri, commanded by Captain Rajat Kumar, was welcomed in Yokosuka by Indian Charge d'Affaires R. Madhusudan and Rear Admiral Yamaguchi Nobuhisa of Japan's self-defense fleet. The frigate is participating in the Japan-India Maritime Exercise JIMAX 25 alongside JS Asahi, JS Omi and a submarine near Kyushu with supports from Pakistan's ground and air self-defense forces. The exercise aims to enhance tactical capabilities and deepen Indo-Pacific cooperation under the Special Strategic and Global Partnership. Following Japan's new Prime Minister Sane Takachi's election, Prime Minister Modi congratulated her and emphasized the importance of India-Japan ties for regional peace and prosperity. The India-Australia Joint Military Exercise Austria-Hind is currently underway in Perth until October 26. The drill focuses on company-level counter-terrorism operations in urban and semi-urban terrains, strengthening defense cooperation between the two countries. The exercise also features stimulated UN peacekeeping operations, enhancing coordination in multinational missions. The Baloch National Movement held an awareness event outside the White House, distributing flyers that highlighted alleged urban human rights abuses and military aggression in Balochistan's Serhi region. Led by BNM USA President Sami Baloch, the camp aimed to expose Pakistan's exploitation of Balochistan's resources and the ongoing humanitarian crisis caused by military operations, including recent drone attacks and bombings that resulted in civilian casualties. Ukrainian activists at the event expressed solidarity with the Baloch people and their fight for justice. The BNM reiterated its commitment to peaceful advocacy to bring global attention to Pakistan's actions in Balochistan. North Korea conducted multiple short-range ballistic missile launches on Wednesday, marking its first missile test in several months, Al Jazeera reported. The launches come just days after the Asia-Pacific Economic Cooperation APEC summit in South Korea, where world leaders including Chinese President Xi Jinping and former US President Donald Trump are expected to attend. South Korea's military defense detected several projectiles believed to be short-range ballistic missiles fired towards the East Sea of Japan. Contrary to earlier reports, the missiles traveled about 350 kilometers and appeared to have landed inland rather than in the sea. Our military has stepped up monitoring in preparation for potential additional launches and is maintaining steadfast readiness while sharing information with the US and Japan, said South Korea's Joint Chiefs of Staff.
This is North Korea's first missile launch since May under South Korea's new president Lee Jae-myung, who took office in June. Earlier this month, North Korean leader Kim Jong-un unveiled the Hwasong-20, a new long-range intercontinental ballistic missile touted as the country's most powerful during a military parade attended by Chinese, Russian and other officials. Despite international bans, Pyongyang insists its weapons program is vital for defense against the US and South Korea. While Trump has expressed interest in resuming talks with Kim, North Korea maintains it will never give up its nuclear arsenal. Israel's military announced that Hamas handed over the remains of 2 additional hostages via the Red Cross in Gaza. Since the ceasefire on October 10, 13 hostages remains have been returned, with 13 more still to be recovered. US Vice President J.D. Vance urged patience, noting many hostages remain buried under rubble. Israel is releasing 15 Palestinian bodies for each dead hostages, according to Gaza's health ministry. Vishwas S led Bengal Warriors thrilling comeback with 19 points as they edged Tamil Thalaiva's 44-43 in the Pro Kabaddi League on Tuesday, keeping their playoffs hopes alive. Himanshu Narwal added 9 points, including crucial reds and all-outs that turned the game. Despite Arjun Deshwal's 20 points and reaching 200 red points this season, Tamil Thalaivas surrendered an early lead. Bengal's strong defense and key tackles from Ankit, Pool, Chandra and Sandeep Saini sealed a dramatic victory at the Thayagraj Stadium. Olympic gold medalist and Lieutenant Colonel Honorary Neeraj Chopra was officially promoted in a piping ceremony held in New Delhi on Wednesday, attended by Defence Minister Rajnath Singh and Army Chief General Upendra Dwivedi. Chopra's appointment as Lieutenant Colonel took effect from April 16, recognizing his remarkable career since joining the Army as Naib Subedar in 2016. The 27-year-old athlete has received several prestigious awards, including the Arjuna Award, Khel Ratna, Param Vishisht Seva Medal and Padma Shri. Despite a recent 8th place finish at the World Athletics Champions due to back issues, Neeraj remains a celebrated sports icon in India. Tensions are rising between the Board of Control for Cricket in India and the Pakistan Cricket Board ahead of the ICC board meeting next month over the Asia Cup trophy handover. PCB Chairman Mohsin Naqvi, who also heads the Asian Cricket Council, insists on personally handing over the trophy to the Indian team in Dubai on November 10, rejecting BCCI's objections. The dispute follows India's refusal to participate in the prize distribution ceremony in Colombo last month, citing protocol concerns. Naqvi accused the BCCI of acting unilaterally and pandering to select extremist groups, while the PCP prepares for possible censure proceedings at the ICC. ICC Chief Jay Shah is expected to mediate as mistrust deepens between the boards amid geopolitical tensions. South Africa dominated Pakistan in a rain-hit Women's World Cup match on Tuesday, winning by 150 runs and moving to the top of the points table with 10 points from 6 games. After rain delays due to the match to 40 overs per side, South Africa posted 312 runs over 9 wickets, led by Laura Wolvaarts
90 and half centuries from Sunelus and Marizane Cup. Pakistan struggled under a revised 234-run target in 20 overs, margining only 83-7 before Rain ended their innings. Cup's 3 wickets dismantled Pakistan's top order, securing South Africa's well-earned victory. So viewers, that's all in the English bulletin. Keep